हेलो Leute, wie geht's? Guten Morgen। आज के लेक्चर में हम करेंगे एक और बेसिक जर्मन टेक्स्ट। ठीक है। इस बात का ध्यान रहे, वी आर नॉट डूइंग ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन बहुत ही हाई लेवल की चीज है। ठीक है। वी आर जस्ट रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग बेसिक जर्मन टेक्स्ट, राइट। तो शुरू करते हैं। Einkaufen gehen मीन्स शॉपिंग जाना। ठीक है। schwimmen gehen, टू गो स्विमिंग। Einkaufen gehen मीन्स टू गो शॉपिंग। Spazieren gehen, to go for a walk, right? So such phrases are very common in German sentences, right? So heute ist Freitag, basic sentence. Heute ist Freitag, आज शुक्रवार है। Today is Friday, right? Friday का spelling ध्यान रखिए। Wir haben heute Morgen in unseren Kühlschrank geschaut und gesehen। ठीक है, फाइन। लंबा सेंटेंस हो उसको तोड़ के समझने का। Wir haben heute Morgen, आज सुबह, in unseren Kühlschrank, what is Kühlschrank? That is फ्रिज, रेफ्रिजरेटर। geschaut, अब ये शाउवन, शाउवन का पार्टिसिपल स्वाई है। ठीक है। सो शाउवन, ऐसा लगता है कि शाउवन का मतलब शो होता होगा, नहीं। शाउवन इज टू सी, टू लिव। und gesehen, ठीक है। सो we looked in our fridge today morning and saw that und gesehen das। ये जो das है तो ये कौन सा वाला है? जैसे होता है ना, मुकेश told me that they will not be coming। तो ये वो वाला das है। ठीक है। and we have already done this in conjunction part। Thus air layer is, what is layer? Layer is empty, खाली। अब ये एयर क्या कर रहे हैं यहाँ पे बाबा? एयर किस लिए आया? एयर आया फ्यूल श्रांक के लिए। एयर का मतलब ही नहीं होता। एयर इज यूज्ड फॉर एनी थर्ड पर्सन नाउन विच इज मैस्कुलिन। ठीक है। सो डेयर से कोई आर्टिकल, डेयर से कोई नाउन हो उसके लिए हम सिंगुलर में एयर लगाएंगे, राइट। सो वी haben heute Morgen in unseren Kühlschrank geschaut und gesehen, dass er leer ist। Today morning we looked in our fridge and saw that, क्या मिला हमको, क्या देखा हमने कि फ्रिज खाली है, राइट। Wir haben am Wochenende viele Freunde zu einer Party eingeladen। Wir haben am Wochenende, am Wochenende is again a phrase, मतलब on the weekend। Viele Freunde, viele is many, a lot of, okay। So viele Freunde zu einer Party eingeladen, zu einer Party eingeladen। ठीक है। किसी को किसी पार्टी में अगर इनवाइट करना, so always use zu einer Party eingeladen means on the weekend we have invited many friends to a party। Simple। Wir müssen deshalb einen groß Einkauf machen। Einkaufen मतलब to shop, शॉपिंग करना, राइट। Einkauf machen भी उसको बोल सकते हैं। ठीक है, एज ए नाउन लगा के। सो ग्रोस Einkauf machen मतलब ज्यादा शॉपिंग करना, मतलब बल्क शॉपिंग। We müssen deshalb, deshalb means that's why we have to do bulk buying। ठीक है, क्योंकि ज्यादा लोगों को इनवाइट किया है। Unsere Freunde sind sehr unterschiedlich। Unterschiedlich means different, various, variety of, varied, जो अलग अलग नेचर के हों। ठीक है। सो unsere Freunde sind sehr unterschiedlich। और फ्रेंड्स आर डिफरेंट। einige möchten, ये einige क्या है? a few of them, some of them, in the sense of numbers, right? So many। einige möchten gern alkoholische Getränke, right? Some of them would like, many of them would like क्या? alcoholic drinks। अभी देखिए गेट ड्रिंक क्या होता है? गेट ड्रिंक इज ड्रिंक एज ए नाउन। ठीक है। एंड गेट ड्रिंक है उसका प्लूरल। अंडर लीवर nur saft oder Wasser। अंडर इज, यहाँ पे अंडर मीन्स अदर्स। अदर्स, लीवर इज गेर्न का वो कंपेरेटिव डिग्री है, राइट। सो प्रेफरेबली नुआ, नुआ इज ओनली, साफ्ट इज जूस, oder Wasser। So einige möchten gern alkoholische Getränke means many would like alcoholic drink and others प्रेफरेबली ओनली जूस और वाटर। मतलब बहुत लोग तो अल्कोहलिक ड्रिंक पियेंगे, उनको अच्छा लगेगा, मगर कुछ लोगों को, अदर्स विल लाइक ओनली जूस और वाटर। अगेन एज आई जस्ट सेड, वी आर नॉट डूइंग ट्रांसलेशन, वी आर जस्ट ट्राइंग टू रीड बेसिक जर्मन टेक्स्ट एंड अंडरस्टैंड देम। ठीक है। ट्रांसलेशन अभी हमारा काम नहीं है। ठीक है।
ताकि हम जर्मन पढ़ सकें, समझ सकें। और उस प्रोसेस में क्या होगा, जर्मन धीरे धीरे अपने आप हमारे दिमाग में आएगी और हम बोलना भी सीखेंगे, लिखना भी सीखेंगे, राइट? इफ यू रीड पर्टिकुलर सेंटेंस सो मेनी टाइम्स, certainly next time onwards you are going to get it automatically, right? So also müssen wir viele verschiedene Sachen einkaufen. Also, so it's not also, it's also means so, not also. Also के लिए जर्मन में auch होता है, right? So so müssen wir, müssen मतलब must, have to. So we have to buy, we have to shop so many different things. Verschiedene Sachen. Sache is die Sache, die Sachen, right? We haben entschieden. अभी entschieden का परिचित zwei entschieden. So we have an entschieden. Entschieden means to decide, means we have an interior, means we have decided what einige Salate zu machen, to make some salads. Der Salat, die Salate, so plural. Some Salad zu machen. Und deshalb kaufen wir nun viel Obst und Gemüse. Obst und Gemüse, right? We have already done this in vocab section. So Obst is fruit and Gemüse is vegetable. So fruits and vegetable. Deshalb kaufen wir nun. What is this nun? Now. That's why we have to buy now what? A lot of, feel is much, a lot of, ज़्यादा, Obst Gemüse. When this Wetter ist, so when is if, when, conditional, right? So when this Wetter ist, when the weather is nice, beautiful, könnten wir auch einen Grill auf den Balkon stellen. अब यहाँ पे क्योंन आता तो उसमें पॉसिबिलिटी ज्यादा हो, ठीक है? ये क्योंटिन है, दिस इज कार्ड्स वाई कंजुंक्टिव, सॉरी वी हैव नॉट डन इट। मतलब वी कैन ऑल्सो, मतलब उसकी पॉसिबिलिटी है उस सेंस। क्योंटिन वी auch einen Grill auf den Balkon stellen. Stellen is to put, ठीक है, कोई चीज कहीं पे रखना। So when the weather, if the weather is nice, we can also put a grill in the balcony. Balcony is balcony. Das bedeutet, das bedeutet, wir müssen auch Würstchen und ein bisschen Fleisch kaufen, right? Now, das bedeutet, bedeuten means to mean, right? Bedeuten का मतलब होता है to mean. जैसे बोलते हैं ना, that means. So, das bedeutet means that means wir müssen auch Würstchen und ein bisschen Fleisch kaufen. That means we have, we must also buy, we have to buy what? Würstchen. Würstchen is sauces and also ein bisschen. Ein bisschen is a little. Fleisch, meat. Okay, that means we have also to buy some sauces and a little meat. Damit alle Gäste zufrieden sind. So damit means क्या होता है? So that, ताकि, जिससे कि, damit alle Gäste zufrieden sind. Der Gast, die Gäste, plural. So that all guests are zufrieden. Zufrieden is satisfied. Wir hoffen, dass es ein schönes Fest wird. अभी ये वाला 10 आ गया तो इसमें क्या है, वर्ब ऑटोमेटिकली लास्ट में चला जाएगा। फाइन। वी होपन मीन्स वी होप व्हाट, दैट एस ein schönes fest wird. We hope that it will be a nice celebration. It will be a good celebration. Fest means festival celebration, right? So with this, we covered another basic German text. So thank you so much for your time and patience. See you in the next session. Till then, keep learning, keep revising. That's again very important. Auf Wiedersehen.